Okay, welcome. Separation between the plates is changed. What will be the effect on the following quantities? तो डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी थ्योरीज है जो एमसीक्यू को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है. इट इज वन ऑफ दैम. तो आप इसे नोट करिए. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटीज? फर्स्ट, चार्ज स्टोर्ड. सेकंड, कैपेसिटेंस. थर्ड, potential difference. Area potential difference between the plates. And it is very common if you go through the previous year's papers of various competition as well as your CBSE board examination, you will find questions based on this theory. Fourth, electric field between the plates. Field between the plates. Okay. And the fifth is stored energy. तो आप इसे नोट करिए. We will develop some number of theories today so that we will be able to solve some number of questions based on capacitance. तो सबसे पहले आप इस थ्योरी को नोट कर लें. जैसे आप नोट कर लें तो आप मेरे को बता दें. So this is very important. अब क्वेश्चंस आएगी तो उसमें हम लैंग्वेज जो आएगी. A parallel plate air capacitor. The meaning of air capacitor is very simple. The medium between the plates is air. So first of all, this capacitor is charged with the help of a battery, and when charging is over, the battery is disconnected. Then afterwards, the separation between the plates is changed. So on changing the separation between the plates, how the following quantities will change? The question number one, charge stored. Question number two, capacitance. So especially I have developed these theories so that इससे बड़ा मदद मिलता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो हमें एक अप्रोच मिल जाती है कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो जैसे आप इसे नोट कर लें तो आप मेरे को बताएं. और DPP 7 मैंने आपको दे दिया है. अभी तक आप लोगों ने उसे सॉल्व किया. एक आध दिन और ले लीजिए तो मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा.
तो पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं. Since battery is removed, तो बैटरी का फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? टू सप्लाई द चार्ज. एक्चुअली बैटरी के दो फंक्शन होते हैं. पहला होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. प्लीज अंडरस्टैंड. The main function of battery is to maintain the potential difference between the plates of capacitor. And second one, battery is the charge provider. And after charging, the battery has been disconnected. So the charge, since the battery is removed, so the charge stored will remain same. So the charge is same. Same means constant. There will be no change in the charge stored in the plates of between the plates of capacitor, because the charge provider is battery, and we have removed the battery, so the charge will remain same. So that is the answer of your first question. As soon as you note it down, please tell me. I will move to the next slide. ओके, धारवी ने नोट कर लिया. ठीक है. निमिषा ने भी नोट कर लिया. ठीक है. So we are moving. Now second question is what will be the effect on capacitance? As you know that the capacitance, the medium between the plates of capacitor is here, and capacitance is given by epsilon naught A by D. Clearly, C is inversely proportional to D. Now, case 1. If D is increased, upward arrow shows increase, then capacitance will decrease. Case 2. If we will decrease the separation between the plates, definitely capacitance will increase. So that is the answer of second question. Third question, you know that Q is constant. There is no change in the charge. But we know that Q can be written as CV equal to constant. So V is inversely proportional to C. But C is inversely proportional to D. Therefore, V is proportional to D. Case 1. If distance increases, it implies that potential difference between the plates will increase. Case 2. Suppose distance separation between the plates is decreased, so potential difference will also decrease. But when you write in the examination, do not make upward or downward arrows. You must write if distance will increase, then capacitance will obviously will decrease. So you should use the words increase or decrease. So note it down.
After 2 or 3 classes, we are going to start with the current electricity. I will be needing some extra classes from your side in this week, at least 1 or 2. So far, you must have understood that if you really want to cover the topic nicely, completely, we need more time. तो 1 या 2 एक्स्ट्रा क्लासेस आप मुझे अलाउ करिए इस वीक में, और जैसे आप इसे नोट कर लेते हैं तो मुझे बता दीजिए. ओके, वहाँ यस बोल सकते हैं. यार भी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए. Okay, when your periodic test will take place, you want some help from my side for question practice. And on my WhatsApp number, please send me the syllabus. I will send you the previous year question model papers on electrostatics, capacitance, current, electricity, and magnetic effects of current. So this was the answer of third question. Now the fourth question is electric field between the plates. Okay, so we will do. Just look. As V is proportional to D, therefore V by D is constant. So electric field is constant. The fifth, stored energy. We know that stored energy can be written as half QV. Since Q is constant, therefore U is proportional to, but V is proportional to D, therefore U is proportional to D. If distance will increase, then potential energy stored in the capacitor will increase. I can explain you this. Actually, what happens when we increase the distance between the plates, then we have to perform some work, and that work is stored in the form of potential energy of capacitor. And if we decrease the distance, the potential energy will decrease, because there is some electrostatic force of attraction between the plates. So to decrease the distance, external work is not required. External work is not required to decrease the distance. External work is required to increase the distance. So whenever we increase the distance between the plates, in such case, the potential energy will increase. So please note it down. Okay. तो आपने नोट कर लिया. So this is the answer of all the 5 theoretical questions. ये पूछे जाते हैं. Theory number 2. So the same as theory number 1.
parallel plate air capacitor is charged with the help of a battery. After charging, the battery is removed. If now space between the plates of capacitor is completely filled by a dielectric, what will be the effects on the following quantities? Charge stored, second, capacitance, third, potential difference between the plates, fourth, electric field, fifth, stored energy. तो आप इसको नोट कर लें. So we will first of all we will answer the question number 1. Charge is constant. Since battery is removed, so there will be no change in charge. There will be no change in charge. नोट कर ले तो बता दें. ओके. प्रिया ने नोट कर लिया. ओके.
तो चार्ज सेम ही रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कैपेसिटेंस। तो इनिशियली देयर वाज एयर between the plates of capacitor. Now the space between the is completely filled by a dielectric. So we have to find what will be the effect on capacitance of capacitor. Okay, next slide. As you know that initially there was air, so capacitance is epsilon naught A by D. Now the space between the plates is completely filled by dielectric. Let the dielectric constant is K. So capacitance will become K epsilon naught A by D. Therefore, we can write C2 equal to K times of C1. So capacitance will become K times of the initial capacitance. Now, question number 3. As we know that charge is constant, charge can be written as CV equal to constant. So we can write C1 V1 equal to C2 V2. 1 means initial values. C1 is epsilon naught A by D. Let initial potential difference is V1. Okay. So C2 will be K epsilon naught A by D V2. So this will be cancelled. So 1 by K V1. So potential difference between the plates will become 1 by K times of the initial potential difference. So we can say that it will decreases. इसको नोट कर लीजिए. ओके, नोट कर लिया. ठीक है. Now we will answer the fourth question. Okay. Let initial electric field is E. So E1 is V1 by D. Let final electric field be E2. V2 by D, because there is no change in distance. But V2 can be written as 1 by K V1. So substituting this value,
So E2 will be 1 by K into V1 by D. Therefore, electric field will be E1 by K. Electric field will become 1 by K times of the initial electric field. Okay, so K is more than 1, as you know that. So electric field will decrease. Remember. So electric field will decrease. कम हो जाएगा. Decreases. You can write decreases. Now we are at fifth question. Stored energy half QV. Q is constant. So U is proportional to V. So U1 by U2 equal to V1 by V2. So U1 by U2 will be K. So U2 will be 1 by K of U1. इस तरह से आप ये पांचों क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो. This is the theory. Logical type, short answer question, medium answer questions. And definitely this theory will help you in solving so many number of multiple choice questions. इसको आप नोट कर लें. When you people will have your periodic test, can you chat with me? सर स्टार्ट हो गए हैं आज से. कौन सा था आज? आज केमिस्ट्री था. कैसा हुआ? Come on, answer, honest answer. अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी ठीक है. अच्छा था. कैसा हुआ? आप लोग मुझसे तो बात कर सकते हैं हर लेवल पे. You should talk to me. तो मैं आपके केमिस्ट्री में भी हेल्प कर सकता हूँ. I will provide you some very nice material, which will be very useful for your board preparation. बहुत लेंदी था. अच्छा, कितना क्वेश्चन छूट गया? 20 हो गए थे. हाँ, कम हुए. तो आप कहाँ रहते हो BHL में? सर पिपलानी. पिपलानी तो बहुत बड़ा है बेटा. पिपलानी में कहाँ? गणेश मंदिर के यहाँ. अच्छा, ठीक है. तो एक दिन मैं प्लान करूंगा कि आई विल रीच सलोनीज हाउस विद सम मटेरियल इन नेक्स्ट वीक. ओके, तो मैं आपको थोड़ा कॉपीज प्रोवाइड कर देता हूँ नोट्स वगैरह की, तो उससे आपको थोड़ा फायदा होगा. कुछ सैंपल पेपर्स मैं आपको भेजता हूँ, इसको नोट कर लो आप. फिजिक्स का कब है? 7th को है. ओके, तो अच्छा, तो 7th को आप लोग क्लास अटेंड करोगे? ओके, तो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ. वी आर डेवलपिंग नेक्स्ट थ्योरी. ओके, तो ऐसे आपको आंसर देना है सिचुएशंस का. देखिए, थ्योरी नंबर 3. A parallel plate air capacitor is connected
to a battery. So this is the situation. The capacitor is connected to a battery. 10 को फिजिक्स है. अच्छा अच्छा. सिलेबस क्या है फिजिक्स का? थोड़ा आप चैट कर देंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ. I will send you some questions. Chapter 1 and 2. What is chapter 1? Electrostatics. नाम लिखो चैप्टर का. Please write the name. तो मैं आपको क्या है शॉर्ट क्वेश्चन बैंक भेज देता हूँ. 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव लाइक दैट. So that will be very useful. If the separation, okay, what is the syllabus? Okay, तो ये तो हमने कर ही लिया है. That's good. Great. तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन भेज देता हूँ. Connected to battery, if the separation between the plates, separation between the plates is changed. मतलब देखिए आप समझिए, कनेक्टेड टू अ बैटरी, हम बैटरी नहीं हटा रहे. What will be the effect on the following quantities? Charge, second capacitance, third potential difference between the plates. First is Q. Q means charge. C means capacitance. V means potential difference between the plates. E means electric field between the plates. And the fifth is stored energy. तो हम इसका सॉल्यूशन जनरेट करेंगे. सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे. Since battery remains connected to the capacitor, so potential difference between the plates will not change. क्योंकि बैटरी का काम ही होता है, बैटरी का मेन फंक्शन होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. So we can write potential difference remains same. So we can write V is constant. अब आप इसको नोट कर लीजिए. कितना आपका जो आज ये केमिस्ट्री टेस्ट हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव था कि सब्जेक्टिव था? अच्छा ठीक है. How many questions were there?
Okay, 30 questions. It was online. Okay, okay. ओके, ये नोट कर लें। तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे कैपेसिटेंस का। ओके, you know that capacitance is given by epsilon naught A by D, so C is inversely proportional to distance. If distance increases, capacitance will decrease. If distance decreases, capacitance will increase. Now third question, we know that V is constant. V can be written as Q by C. So Q is proportional to C, but C is proportional to 1 by D. Case 1, if distance will increase, charge will decrease. तो चार्ज कहाँ चला गया? चार्ज कहाँ चला गया? डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली बैटरी से कनेक्टेड है. इट इज कनेक्टेड, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर चार्ज डिक्रीज होता है तो ये बताता है कि कैपेसिटर से चार्ज कहाँ फ्लो हो गया. कैपेसिटर से चार्ज का फ्लो हो गया. कहाँ हो गया? बैटरी में हो गया. तो बैटरी जुड़ी हुई है, ऑलरेडी कनेक्टेड. और इसको नोट करिए. इसी तरह हम केस 2 भी डिस्कस कर सकते हैं. If distance decreases, charge will increase. तो ऐसे केसेस में बैटरी चार्ज दे देगी. बैटरी चार्ज का फ्लो कर देगी. इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज इंक्रीज हो गया. तो उसका एक लॉजिकल रीजन हमारे पास हमेशा होना चाहिए. This definitely theory will is going to help you. You may get some objectives. It is very tough that school may open in the month of September even. ऐसा हो सकता है अक्टूबर लग जाए. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट हमारा काम है पढ़ना, इसलिए हम लोग पढ़ते रहेंगे. देयर विल बी अ डिले इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 4 to 5 months. ये तो हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिया. आप इसे नोट कर लीजिए. उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देंगे. ओके, रिया आपने नोट कर लिया. ओके, ठीक है. तो वी विल मूव फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड. फिफ्थ था स्टोर्ड एनर्जी. ओके, let E1 is the initial electric field
and V1 is the voltage of battery. So E1 is uh, V1 by D. So we can say that since V is constant, so E is inversely proportional to distance. If distance will increase, then electric field will decrease. If distance will decrease, then electric field will increase. Now the fifth, half CV square energy, but V is constant, so U is proportional to C, but C is proportional to 1 by D. If distance increases, potential energy will decrease. If distance decreases, ये देखिए, if distance decreases, then potential energy will increase. इसको नोट कर लीजिए. Okay, note it down. नोट कर लिया आपने? Okay. ओके धारवी, कुछ पूछना है आपको? पूछो. You can ask. ओके, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है. It's all good. Now the theory number 4. So these theories will help you in solving your objectives. The space between the plates of a parallel, okay, parallel plate capacitor. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन स्पेस है इज कंप्लीटली filled. ओके, एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा हम रिमूव कर लेंगे. एक, सॉरी, वेरी सॉरी. A parallel plate air capacitor. Sorry.
is connected to a battery. If battery remains connected, and the space between the plates is completely filled by a dielectric, then what will be the effect on the following quantities? वही पांचों आंसर: चार्ज, second capacitance, third potential difference between the plates, fourth electric field, and fifth is the stored energy. इसको आप नोट कर लीजिए. ओके, नोट कर लिया. ये चार थ्योरीज हैं, उनकी मदद से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का ही आंसर देंगे. तो थर्ड क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Since battery remains connected, so potential difference will not change. इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे. कैपेसिटेंस इनिशियली देयर वाज एयर, है ना. तो कैपेसिटेंस पे कैलकुलेट करते हैं. इनिशियल कैपेसिटेंस वाज epsilon naught A by D, and final will be K epsilon naught A by D, because dielectric is filled. So C2 will be Kc1. So capacitance will become K times. अब फर्स्ट पहला आंसर हम ले लेते हैं. चार्ज. Charge is Q equal to CV, but V is constant. So Q is proportional to C. Q1 upon Q2 equal to C1 by C2, and C1 by C2. From here we can have 1 by K equal to C1 by C2. So Q1 by Q2 is 1 by K, and Q2 will be KQ1. Charge will increase by K times. इसको आप नोट कर लो.
ओके, ठीक है, आपने ऐसे नोट कर लिया। तो पहले 3 क्वेश्चन का हम आंसर दे चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पांचवा है स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, you know that electric field is V by D, and in this situation V is constant, as well as there is no change in separation between the plates. Therefore, electric field is constant. Now let's come to the energy half CV square. V is constant, so U is proportional to C. So we get U1 by U2 equal to C1 by C2. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले एयर था, बाद में के डाइलेक्ट्रिक फिलिंग हो गई, लाइक दिस, तो कैंसिल हो गया। So U1 by U2 will be 1 by K and U2 will be K times of U1. So while solving the theoretical question, you have to revise this theory. इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इन्हीं 4 थ्योरीज पर हम काफी चीजें करने वाले हैं। हम कैपेसिटेंस पे एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाते हैं आपके लिए और कुछ भेजते हैं आपको, दैट विल हेल्प यू। इसको नोट कर लें आप। ओके, नोट कर लिया बेटा? ठीक है, तो ये हम यही एंड कर रहे हैं। मैं आपको कुछ भेजता हूँ अच्छी चीजें। आई विल सेंड यू सम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, सो इट विल हेल्प यू, है ना? ओके, आई एम पुटिंग एन एंड ओवर हियर। Take care. I am sending you the objective on chapter 1 and chapter 2. Okay, bye. See you. Take care.